Good morning students, welcome to Commerce Candidate Odisha. Today we'll start with the revision part of strategic management. ठीक अछि काली हमें किछ क्वेश्चंस ऑलरेडी देखिथिलु आज हमें देखिबा रिमेनिंग क्वेश्चंस ओके तो पेज नंबर 303 2024 December 7 marks question आसीची. The transactional nature structure seeks to obtain the best form of the two extreme international strategies, the multi-domestic strategy and the global strategy. In this context, दिजन तो अच्छो कौन एते हैं वाइब दोच ना कौन मते खुडखाड़ोरे identify and discuss the characteristics of transnational structure. को जल्दी what is transnational structure? At the page record 303 तुझे लाज नहीं कि सत्य मुको ये और मत लाज नहीं get idea अब तो कुछ ना हला तमने नो आइडिया कोयर कोन हिंदी म जानि परनी एडा तो रिवीजन डा तो मु कोन रेगुलर क्लास करची मीनिंग पचरची हां नाडा सुनलाले लागछ तो नामु इंटरोगेट करची हां मोडे देखै गिर कि ए लोको चिंचुगी देखो ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर सुजल कोन ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर माने चिन्ह केबे देखिन ना कोन नहीं घर बाहर नुगी केबे सेत में जानि परनो online students answer ठीक अछि लेखो मीनिंग ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर हला ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर माने कोन वी आर लाइक से क्वेश्चन रे मध्ये से देछि देखो द बेस्ट फॉर्म ऑफ टू एक्सट्रीम इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज आउ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज आउ ग्लोबल स्ट्रेटजीज तीनटा जरा कोन हेल्दी कंपटीशन हेल्दी कॉम्बिनेशन सॉरी कंपटीशन है हेल्दी कॉम्बिनेशन तो ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर रो मीनिंग लेखो ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी भी हे पारिबो तो एथरे कोन होची इट इज अ business approach that balances global standardization with local responsiveness तो कौन कहूँ से ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन कहूँ ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन रो मीनिंग कौन ना वी आर एस्टैब्लिशिंग सम स्टैंडर्ड्स जोड़े कि ग्लोबली माने एडॉप्ट हे पारिबो माने कोन ग्लोबलाइजेशन मीनिंग बुझ माने आम कंट्री रो जहा भी ट्रेड अछि सेटा में फ्री करछु ताकि सब कंट्रीज को हमें कोन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज carry out kari paribo a business approach that balances global standardization with local responsiveness एडा रहले ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर रो माने मीनिंग दा ओके ता परे लेखो एथरे कोन होउछ एक्चुअली it involves a company having centralized operations in one country while maintaining
while maintaining operations and assets, operations and assets, while maintaining operations and assets in multiple countries, multiple countries. एथरे कौन होची दिस स्ट्रक्चर माने ए स्ट्रक्चर रो पर्पस कोन ए स्ट्रक्चर को प्रकार रो कंपनी एडॉप्ट करि परियो एथरे आगा तमरा आंसर अछि दिस स्ट्रक्चर aims at leveraging माने कोन जानि परछ ना दीडा जिंस रो माने कॉम्बिनेशन ना हमें मोस्ट यूजफुल मैनर रे यूज करिया माने फॉर एग्जांपल एबे हमरो ग्रुप 2 बहुत कष्ट ग्रुप 2 बहुत इजी ग्रुप 1 कष्ट इन द सेंस कोन बहुत लेंदी समस्त में एते इजीली बुझा पड़ियोनी तो जेतलो तमे दीडा ग्रुप मिसई की दोछ तो यार लेवरेजिंग द बेनिफिट माने ग्रुप 2 रो इजी डा तमे कोन करछो माने टिके बैलेंस करूछो ताकि तमे एग्रीगेट रे क्लियर हे जिवो तो लेवरेजिंग माने होची सेडा माने तमे गुड जिंस जदी कष्ट अछि गुड जिंस जदी इजी अछि तो दीडा जन कॉम्बिनेशन रे एवरेज इजी टिके हे पारियो हार्डनेस टिके कमिबो तो से सेडा होछ तो दिस स्ट्रक्चर एम्स एट लेवरेजिंग कोन लेवरेज करछि ना दीडा जिंस most important global efficiency and brand recognition while adapting to unique needs and preferences of local markets. ओके एडा रे ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर एतिक सब तो मो लेखिया पड़िबो 2024 December 7 marks question na एडा 6 points अच्छी फर्स्ट लेखा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल माने कोन गुटे पर्टिकुलर कंट्री पूरा कंट्रोल करबे माने तर हेडक्वार्टर्स गुटे जगह रे रहबो सेकंड होची डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस बट तर एक्टिविटी बहुत सारे कंट्रीज रे होथिबो ओके दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड operations then global integration local responsiveness hierarchical organization then cooperation and interdependence एटा रहला कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट जदी बुझनी पचार सब जगह तमरो डेफिनेशन रहबा मु काडी के लिखि बट वर्डिंग डिफरेंट अछि ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट अछि पचारि पारियो
बुझिले ना किछि डाउट्स अछि का? ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर टा जब तुमको आइडिया भी नथिबो तमे गोटे थोर क्वेश्चन देखो से को टाइप देइछि सेथरे तमे इंपोर्टेंस टा कैरेक्टरिस्टिक्स टा देख के लिखि पारि माने तुमको जेहेतु मु एडी लिखिछि गोटे थोर देखो क्रॉस चेक करो लिखि पारियो। ओके फाइन किछि डाउट्स नै कोन हैला किछि डाउट्स नै बुझिला अलग अलग पचेरी ना कोन चपड़ा पके दी जो नेक्स्ट देखो the achievement of goal congruence is essential in order to increase the profitability of the organization and to achieve its goal. With reference to this statement, demonstrate some of the areas that have the ability to create goal congruence. कौन पूछला क्वेश्चन ला कौन बुझला क्वेश्चन ला गोल कॉन्ग्रुएंस रो मीनिंग मन अछि ओएम जेहेतु ओएम जदि भलो होची एसएम स्किप करि परिबो एमती बट ओएम जदि भलो होनी गॉड नोस कौन होबो गोल कॉन्ग्रुएंस रो मीनिंग मन अछि देखला ला लाची कोडी आउथरे इंटरोगेशन स्टार्ट गोल कॉन्ग्रुएंस मीनिंग को गोल टा कॉन्ग्रुएंट हैला ना नहीं देखियो नहीं पक्का ना नहीं से हाँ कहछि या नहीं कहछि से इडा कहछि एडा कोन जोड़ा हेले चळयो से टाइप्स ना कोन congruency माने जानि पारछ congruency of triangles we used to have congruency of triangles रे कोन होतिला दीटा triangles एटलीस्ट तांकर पेरिमीटर रे की एरिया रे की देखिबा पई कोन हले गुटे सिमिलरिटी थिला हमें कोन कहउथिलो congruent कहउथिलो तो गोल congruence रे कोन होची ना लेखो when 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 there is a consistency when there is a consistency when there is a consistency or agreement between individual goals and company's goals कौन कहला individual goals and company's goals जदि किसी similarity अछि कि कोन अछि तो then only we can say that it is congruent किंबा goal congruency कहि गिरबी ओके तो एडा पे हमें गोटे जिंस भी पढ़थिलु स्मार्ट अप्रोच टा एडा मन अछि ना नै जाननी स्मार्ट अली गोटे जिंस पढ़थिलु स्मार्ट अप्रोच मो मटेरियल रो आगे मन पकी तम कहू स्मार्ट रे कोन थिला स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट टाइम बाउंड हैला फर्स्ट टाइम सुनला ले तो लागिया कथा नहीं स्पेसिफिक मेजरेबल achievable relevant and time bound okay specific measurable achievable relevant and time bound जहाँ भी तमे गोटे गोल करूच तो गोल should follow the smart approach
गोल सबले स्मार्ट अप्रोच फॉलो करबा निहाती दरकार बुझिला। तो सी कौन पचारा आम क्वेश्चन रे सेटा देखो मो गोल गोल कांग्रुएंसी रे तमरो मीनिंग टा मन पकिया पे लिखिली। तो सी कौन पचारला ना द एरियाज दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कांग्रुएंस क्रिएट केमिति करा जाए हैला केमिति करा जाए निजे आइडिया करिकी को कुछ भी चलियो। एरियाज that have areas that have the ability to create goal congruence को एरियास रे ही पारिबो ना आमे लिखि पारिबा 7 points ओके। फर्स्ट थिंग होची क्लियर कम्युनिकेशन तमरा कम्युनिकेशन प्रोसेस ता गोल ला जति तांको क्लियरली बुझेई पारिलो कि लॉन्ग रन रे तांकर केंदी बेनिफिट हबो केंदी इंक्रीमेंट हबो कोन हबो बहुत भल से गोल कांग्रुएंस अचीव हे पारिबो। देन शेयर्ड वैल्यूज माने कोन when individual and the organization share core values it is easier to align individual goal with the organizational objectives and both are motivated माने दिजन जाको बेनिफिट हैला आलिया कोन ओटे जिंस रखिबा को पड़िबो दैट इज शेयर्ड वैल्यूज। देन आछि हमरो मोस्ट इंपोर्टेंट इज इफेक्टिव लीडरशिप तापरे ट्रांसपेरेंट गोल सेटिंग प्रोसेस तापरे conflict resolution employee involvement last one is regular feedback loops तो गोल कांग्रुएंसी रो मीनिंग दा फर्स्ट बुझा पड़ला। गोल कांग्रुएंसी रो मीनिंग कोन व्हेनेवर वी आर अलाइनिंग द कंपनीज गोल विथ द इंडिविजुअल गोल्स तो एडा बुझा पड़ला। तो ये कहूची को एरिया को हम फोकस करले कि को एरिया को हम धरिले गोल कांग्रुएंसी दा इजीली अचीव हे पारिबो। तो वी हैव 7 पॉइंट्स हियर। तो से कोन कहला फर्स्ट थिंग होची क्लियरली कम्युनिकेट करिवो। सेकंड थिंग होची जहां भी करिवो दिजन जार बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट देखि करियो। देन इफेक्टिव लीडरशिप माने लीडरशिप माने होची कोन तांको को निजे इंडिपेंडेंट से किंदी बनेबो इंडिपेंडेंटली गोल किंदी अचीव करे रछि सेडा को से किंदी गाइड करिवो। देन ट्रांसपेरेंट गोल सेटिंग प्रोसेस इमति नै कि से पार्शियलिटी करिवो हैला जो माने जदी किछि फेवरेबल लोकान को टिके गोल देगिरी अनफेवरेबल लोकान को अधिक अधिक देगिरी सिमति करियाने। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन माने जदी किछि झगड़ा वडा होची किमा किछि डिसएग्रीमेंट हे होची कंफ्यूजन अराइज होची तो से संगे संगे कोन करे रछि सेडा को रेजोल्यूशन करे रछि माने संगे संगे सॉल्व करे रछि। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट माने एम्प्लॉयज केते की इन्वॉल्व होचंदी से देखिबो एंड ट्राई करिवो कि तांकर इन्वॉल्वमेंट ता किंदी अधिक हबो बुझिना माने निजो इंटरेस्ट रे तांके काम करिया पे कोन करिया रछि एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट ता देखिबो। देन रेगुलर फीडबैक लूप्स माने कोन माने होची तमे जदी गोटे जिंस करलो काम करलो तो संगे संगे फीडबैक नबो और फीडबैक दबो माने तुम जदी से कामडा भल लागिला तो तमे संगे संगे कहियो कि हां तमे लागि हमर एक गोलडा अचीव हला तमे बहुत जल्दी एडा सरेलो तमे बहुत इफेक्टिवली करलो एफिशिएंसी भल अछि सिमती अप्रिशिएट भी करियो जदी किछि भूल भाल जहां भी हो सेडा संगे संगे करियो। आ फीडबैक लूप माने कोन तमे अचीवमेंट कहिबो किछि भूल भाल लेले कहबो जदी तांको किछि प्रॉब्लम होछि सेडा भी तमे सेति के एका जल्दी कोन करे अछि रिसीव करे अछि। ओके दैट इज फीडबैक लूप। तो एति की एरियास रे जदी गुडे कंपनी काम करछि तो तारो किछि भी मतलब किछि भी प्रॉब्लम न थाए कि गोल कांग्रुएंस ता आराम से अचीव हे जिवो बुझिला। लेखियो एति की आगा अछि बट आंसर ता से 7 मार्क्स पे देछि तो तमे एलैबोरेट करि परिबे। मैं गुड लाइन रे लिखली सेडा को तमे डिस्क्राइब करके लिखिया अछि माने मुझे लिखली एवरी गोल शुड फॉलो स्मार्ट अप्रोच इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव वन। तो स्मार्ट अप्रोच कोन गुड लाइन लिखिबो एरियास कोन करिवो सेडा लिखिबो चार्ट इनती करके तळ तळ टे लिखिबो। एग्जाम रे के पहले इदि लेखि कि ताको डिस्क्राइब करिवो एरिया सेंते लिखिलो ता तळे 7टा पॉइंट
ତା ତଳେ ଟିକେ ଟିକେ एक्सप्लेन करबो माने गोटे पेज रे जेमे आस 7 मार्क्स क्वेश्चन माने गोटे पेज सीएमए एग्जाम रे ताडो अधिक लेखिबा हबो हैला 5 मार्क्स माने हाफ पेज 3 माने सफिशिएंट टू द पॉइंट लिखे 2 3 सब सेमती 4 5 गोटे प्रकार लिखिबो हाफ पेज 7 मार्क्स इज फुल पेज ओके पिलानर मिसकनसेप्शन रही जाउची कि 7 मार्क्स माने वी हैव टू राइट 2 पेजेस बट 2 पेजेस लिखिले भलो रो अधिक खराब हबो ओके फाइन ए दिडा क्वेश्चन हमर आंसर नथिला तो मुझे जहाँ डिस्कस कर देली पेज नंबर 303 ऑफ द न्यू स्कैनर 2024 डिसेंबर दीडा क्वेश्चन आसी सेम चैप्टर 14 मार्क्स क्वेश्चंस हे वाला बहुत इजी तुमको किछि कॉम्प्लिकेटेड लागिला एथरे नहीं ओके फाइन नेक्स्ट देखो से कौन होची 2024 जून माने एसएम रो क्वेश्चंस भी बहुत कष्ट आसुची ऑडिट देलाळिया दोच ओके देखो से कौन कहला Hammer and Champy 1993 point to the existence of a set of commonalities, recurring themes or characteristics that can guide business process re-engineering. In accordance with this, align the said commonalities or characteristics that guide BPR. कौन बुझिला को किन क्वेश्चन दोच देखो जता पिला नहीं गोटे करथा होचंदी करिबा कथा भी एसएम डा फर्स्ट सार देबो तापर ओएम बुझबो काहे ओएम बहुत लेंदी एसएम जदी तमे सारी बनी फर्स्ट रे तो लिखि पारियो तमे एग्जाम रे फर्स्ट एसएम लिखिबो देन ओएम बुझिबो हैला नले तो टाइम हबो ना सेटा ठीक हबो ना ठीक हबो ओएम डा करला बेलको तो मुंड रे गोटा चलथि कि भाई एसएम अछि और किन लिखि एसएम को तमे मैक्स टू मैक्स केते दबो 30 35 मिनिट्स 35 मिनिट्स रो अधिक दबनी फर्स्ट 35 मिनिट्स रे एसएम सार दबो तापरे देखिबो कोन ओएम फर्स्ट 15 मिनिट्स जोड़ा तुमको मिलছে ସେଥିରେ ପିଟ୍ क्वेश्चंस बाध्य ହେଇକି सॉल्व करदार अछि सॉल्व करिकि रखिदार अछि सरिला पारे तमे कोन करबे फर्स्ट एसएम लिखि देबो मोस्ट कॉन्फिडेंट आंसर रे स्टार्ट करियो जोड़ा रे कि तुम पूरा कॉन्फिडेंस अछि को ऑर्डर रे भी हो लास्ट क्वेश्चन भी हो ସେଥିରେ स्टार्ट करिवो एसएम रे टोटली सार देबो देन जिवो ओएम को ओएम रे ट्राई करिवो एटलीस्ट दीडा क्वेश्चन फुल करबी ठीक करबी हैला जाओ आ बाकी तीनटा कि कोन जाओ बट दीडा क्वेश्चन पूरा ठीक करबो सेडा सरला परे तुम जदि टाइम देखिकी जोड़ा इजीली हे पारे सानो दीडा क्वेश्चन इजीली हे पारे ना गोटे बड़ मु धरि सेडा तुम देखिबो जदि गोटे रहउची किछ असुविधा नै दीडा क्वेश्चन अटेंड करछ तो भलो सानो सानो मार्क रो माने मु कहडा 7 मार्क्स दीडा अटेंड कर 14 मार्क्स पुरा छाड़ देले किछि कहिए नै काहे हेले सेडा टिके स्टेप पेडा टिके स्टेप हेगी मिल जो बट 14 टा तुम अटेंड करियो अधारे छाड़िबो ए 7 तो गला सेडा भी पूरा मार्क तुमको मिलियो तो स्ट्रेटजी रे सेमती हैला डायनामिक रहर अछि संग संगे किनी फ्लेक्सिबली चेंज करबो से टाइम कार को चैप्टर भल से होतो देख मनर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखो बहुत भल से आसुछ मता आनथले हैला क्रैशिंग गेले मुसे क्वेश्चन आगा छाड़ देबे काहे टाइम बहुत लागी जाय सेथरे ओके फाइन तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नै ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ओके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कोन करबो तमे पछ पेज रे रफ रे फर्स्ट संग कर देबो से तापरे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोल से जा सब वोकेल बैम जहाँ भी अच्छी से जा सब कर देबो करी करी एति मान देबो डायरेक्टली एलपीपी अच्छी सिमुलेशन प्रॉब्लम जदी पड़ जाउची सिमुलेशन ता तो तमे छाड़ी पारो नै सिमुलेशन आराम से करि परिबो तो से जगह कोन हां हे परिबो पर संग संगे कर देबो रेंज अच्छी हमरो सिमुलेशन अच्छी तो से जगह करि देले किछि नै तापर बड़ क्वेश्चन को तमे टाइम दे पारे आ तापर जदी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ता अच्छी लास्ट को सेना रखिबो हैला फाइन तो कौन से पचला बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग रो कॉमनैलिटीज रो मीनिंग कोन रे ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेस्पोंड पेज नंबर 302
commonalities माने characteristics, okay, features जोड़ा कि माने देखो commonalities और characteristics रो difference कोन characteristics माने गोटे particular BPR जहा तो सीए कहूची commonalities माने BPR जो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करची समस्त भितर कोन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि तो डिफरेंस किछि ओहिलानी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जहा एडा आगा पके परिबा तो फर्स्ट मते को बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग माने कोन बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग ए नाडा सुनला लाला नहीं सब तो पिंक रेटिंग हेडिंग दियो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बहुत बड़ा चैप्टर टा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टा चैप्टर नंबर 10 मुझे तोड़ पढ़ी जे सेतोळ मध्ये होईची It is a management practice. Lekho easy words re lekho ji. It is a management process. It is a management process or practice. Process or practice in which management process or practice in which the related tasks required the related tasks required to obtain a specific business outcome to obtain a specific business outcome to obtain a specific business outcome are radically designed to improve tinda jinso efficiency effectiveness and performance quality ही था ना बट क्वालिटी कौन जानछु ना रिलेटेड टास्क माने गुटे पर्टिकुलर एलिमेंट एबे क्वालिटी पे ए तीनटा जिंस देखिया पड़िबो क्वालिटी अच्छी कॉस्ट अच्छी कस्टमर सैटिस्फैक्शन अच्छी माने सी कहूची बिजनेस रो को प्रोसीजर को ऊपर तमे फोकस करूछ दैट इज बीपीआई ओके so कहूची देखो बीपीआई कैन आल्सो इंप्रूव अदर बिजनेस एस्पेक्ट्स सच एज कॉस्ट आउटपुट सर्विस स्पीड क्वालिटी एटसेट्रा हैला एति की सब जिंस ता अंडर आसुछ तापरे लेखो it basically aims to eliminate tasks that don't improve eliminate tasks that won't improve performance or provide value to customers माने ताड़ किछि लाभ हो नथि सिमतियार कोन करियो सी एलिमिनेट करियो
एबे ता अंडर कॉमनलिटीज देखो हैला से जगह लिखिबो से तो ऑलरेडी पॉइंट वाइज अछि ओके combining several jobs into one allowing workers to make decisions performing the steps of a process in a natural order देखुछ ना recognition that processes have multiple versions and designing process to take account of different situations reducing checks and controls to the point where they make economic sense, minimizing reconciliation, appointing a case manager to provide a single point of contact at the interface between process, performing process when it makes the most sense, reconciling centralization with decentralization in process design. तो तुमको न बुझला पॉइंट्स किछि नै खाली मन रखियार अछि माने अल्टीमेटली से कोन करछि जहां भी करियो तार गुटे की दीटा बिजनेस एरियाज केमती इंप्रूव हबो ऑल से हबो सेडा देखियो पड़ी ओके को पॉइंट डाउट अच्छे पचारि पारे ऑनलाइन फ्रेंड्स को पॉइंट डाउट अच्छे पचारि पारे बुझो छी डाउट क्वेश्चन देखो 2024 जून रो अच्छा 2023 डिसेंबर देखो से सेम डाइट 24 टा डिस्कस करिए से 23 डिसेंबर पेज नंबर 299 सेम जिनस हमें देखिलो एबे एस्पेक्ट से कुछ हमें भी जो देखिलो एरियाज दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस सर टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा बारंबार देछ देखो बीपीआर तो इंपोर्टेंट बीपीआर तो केते जगह रे देछ हां बीपीआर बारंबार देछ बीपीआर गुटे एसपीयू गुटे तो जो बारंबार देछ 2023 जून रे आसिछ से हैमर एंड चैंपी टिके मन रखबो तांके अगर डिफाइन करचंती बीपीआर पे अंडरलाइन कर दियो पेज 298 2023 जून ब्लू पेन रे कर भाई ब्लैक रे कोन बदस्य तुमको हाइलाइटर ले धरथांदा गोटे काम कर सुनो हाइलाइटर मु जोक करनी हाइलाइटर धरिबो एबे ए जाको जो अछि एति की सब जे कोन खाली दरकार नीड फॉर एसबीओ इन देले तुम क्वेश्चन जा टिके देखियो सुविधा पूरा पढ़ला को टाइम हबनी ना हाइलाइटर टिके धरि के आसियो कर दबा ओके 2023 डिसेंबर क्वेश्चन ता देखिलो किछ डाउट अछि कि देखिलो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन
ओके किसी डाउट अच्छी सूरज बुझिला कौन टा कौन टा देखियो नेक्स्ट पे देखियो जो क्वेश्चन टा पाया पड़छि 2024 जून कौन देछि मत खाली बुझो क्लास मिस करछे से भासी बखाली बुझो से क्वेश्चन टा को बुझिला कोन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन मु कहूची के मते बुझियो आई एम लीविंग इट इन द ग्रुप तो मैंने जून अटेम्प्ट ना जून अटेम्प्ट रे तमे एटा जानछ ना नै म जाननी म एटा ओपन डिक्लेरेशन दोची स्कैनर रे जेतिकी भी अछि मु एटा आगे भी कहिछि आई थिंक जून अटेम्प्ट रो क्वेश्चंस डिसेंबर अटेम्प्ट रो क्वेश्चंस बहुत थरा आसुछ डायरेक्टली इमिति भी होए कि एडी ना खाली चेंज हबो एंड अगेन सेडा का पड़जिबो सेम चैप्टर रो पड़जिबो कि टिके ट्विस्ट करिगो क्वेश्चन टा बुझलो 7 मार्क्स रो मोळे जे पास हबो पड़थे ताकू 7 मार्क किछ नै बट तमन सब रैंक स्टूडेंट्स तो 7 marks is very crucial. Design test माने कौन से कहिछि 9 tests से फर्स्ट कहला माइकल गोल्ड एंड एंड्रयू कैंपेल provide 9 design tests against which to check specific tailor made structural solutions तो से कौन कहला तांके कहउछन्ती 9 design tests से प्रोवाइड करिला को जिंस को चेक करिया पई ना टेलर मेड स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस माने इमिति गुटे जिंस स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस माने कोन स्ट्रक्चरल डिसीजन स्ट्रेटजी हमें पढुछु तम मन नथियो structural strategy decision making रे कौन होची ना we are designing something according to the market adaptability माने किछि नै आमे गोटे प्रोडक्ट आनुछु इंटरेस्टेड अछु इश्यू भी करिया चाहूछु मार्केट को आनियो भी चाहूछु बट आमे देखिबो कोन सेटा मार्केट रे चालिबो कि नै से पर्टिकुलर टेस्ट को आमे कहूछु डिजाइन टेस्ट तो सीए कहूछि सिमतियार 9 से टेस्ट देछि तमे एटलीस्ट गोटे 7 रा को जोडा रे कि तमे प्रोडक्ट ता मार्केट रे लॉन्च करिया आगे तमे करबो एतिके जिंस अच्छे क्वेश्चन भितर ओके लेखो डिजाइन टेस्ट रो मीनिंग कोन
design test. Evaluations of a product's design. Evaluations of a product's design focusing on usability, function, and user experience. देखो से को तीनटा जिनस टेस्ट करिवो फर्स्ट डिजाइन टेस्ट रो मीनिंग पचले तो मेडा लिखियर अछि हेले एजा कोन ना these tests can range from early stage design evaluation design evaluations to user testing of a final product. से कौन देछि देखो टेस्ट सब स्पेसिफिक अछि ना कौन इज नॉट अ स्पेसिफिक परीक्षा जो ना ए जगह का स्पेसिफिक को हेले डिजाइन टेस्ट अंडर ए नॉट आसु से कहले देखो मार्केट एडवांटेज टेस्ट पेरेंटिंग एडवांटेज टेस्ट पीपल टेस्ट feasibility test specialized cultures test the difficult links test the redundant hierarchy test the accountability test the flexibility test तो तमे देखो से 9 पॉइंट्स तुमको कोडा बुझुनी काहे ले एजार ना खाली बड़ बड़ दिया आइछ बट आमे नॉर्मली किटे प्रोडक्ट लॉन्च करे आगे जति के जिंस करू से सब जिंस अछि गुड थर रीड करो कालटू टिके मार्कर धरिकी आसिले संग संगे में मार्क करबा नल तो ए भितरे हजार इच्छा कहा गल न होछ किसी डाउट्स अछि कार पढ़ी की को
बुझुनी कहले पचर माने तमे जो डिजाइन टा नेचर सेटा तमे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को मैच होचे ना नहीं फॉर एग्जांपल तमरो कंपनी आगे सर्विस ओरिएंटेड कंपनी ना हैला तो आफ्टर सेल सर्विसेस रो डिपार्टमेंट तमे करि परियो से प्रोडक्ट टा करि परियो आ बाकी तमरो जहा भी अछि तम प्रोडक्ट जोड़ा लॉन्च कर से टोटली गोटे प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऊपर जदि डिपेंड होच तो तमरो कंपनी रो येटा तो पड़ोची ना सेफरे इंपोर्टेंस टा सब क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट अछि ए चैप्टर ओके तो नेक्स्ट स्टेप हां 2023 डिसेंबर रे सेम क्वेश्चन अछि सेडा हम देखि सारलु 7 मार्क्स रो देन अछि हम 2023 डिसेंबर 7 marks while designing a control system top management should remember that control should follow following strategy in this context enumerate the recommended guidelines for proper control system टा establish करिया पे guidelines कोन कोन रहबा दरकार so in designing a control system top management should remember that the control should follow strategy unless controls ensure the use of proper strategy to achieve objectives there is a strong likelihood that dysfunctional side effects will completely undermine the implementation of the objectives. The following guidelines are recommended. कौन guidelines अच्छी देखो. Control should involve only the minimum amount of information needed. Must be reasonable. Do not work unless they are acceptable to those who apply them. Monitor only meaningful activities and results. Flexible to take care of changing circumstances. Should be timely so that corrective action can be taken before it is too late. Long-term and short-term control should be used. Should aim at pinpointing exceptional cases. Emphasize the reward of meeting or exceeding standards rather than punishment for failing to meet standards. माने से कहूँ कंट्रोल सिस्टम ना मैं एस्टाब्लिश करिया कंट्रोल माने कौन आम फर्स्ट गोटे प्रीडिटरमाइंड डाटा देबा ताको एक्चुअल सहित कंपेयर करबा जदि किछि डेविएशंस अछि ता विषय में कथार्ता हेबा डिस्कशन करिबा तो सीए कहूँ कंट्रोल सिस्टम टा एस्टाब्लिश करिया पई वी शुड हैव द मिनिमम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ से इंफॉर्मेशन भी रीजनेबल थिबार अछि माने सफिशिएंट एंड रीजनेबल थिबार अछि तापरे से जहां भी कहू से एक्सेप्टेबल थिबार अछि 2 मास पाठ पढी के रैंक आनो कहि के बाडाइले हबो हैला तो एक्सेप्टेबल कंडीशंस रीजनेबल कंडीशंस कहया पड़बो फ्लेक्सिबल रहया दरकार माने जदी किछि प्रॉब्लम होस तो चेंज कर परलाले रहया दरकार तापरे करेक्टिव एक्शन का जहां भी तांके नोचने टाइमली मैनर रे नबा दरकार हैला ऑन टाइम नबा दरकार तापरे लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल्स दी प्रकार गोल्स एस्टैब्लिश करे अछि देन एम एट पिन पॉइंटिंग एक्सेप्शनल केसेस माने किछि एक्सेप्शंस जदी अछि सेजा सब कोन करिया पड़े हाईलाइट करिकि से प्रॉब्लम केन सॉल्व होबो देखिया पड़ियो तापर emphasize the reward of meeting or exceeding standards माने standards meet करियार standards meet करले कोन रिवार्ड मिलची exceed करले कोन रिवार्ड मिलची जदि meet करू ना हांती तो केंदी पनिशमेंट मिलची तो पनिशमेंट जदि मिलची न meet करिया पे meet करले तांको रिवार्ड मध्य देबा दरकार तो एजा होची कोन हम कंट्रोल गाइडलाइन माने जे किछि पर्टिकुलरली कोन पढी के लेखिलाडा नै तमे निजे लेखिया पड़ियो एजा सब भाबी किछि डाउट्स तार फाइन बुझले तुम दी जण कोन हैला मो सुखे बई जति जण पाठ बेसी हैला ना कम हैला ना कोन है तो BPR or reasons that lead an organization to take माने causes of BPR है ना सेटा देछि 2023 जून रे देछि visualize as if you are heading a project based firm
Justify the formation of a project based structure in your firm. Evaluate the advantage and limitation of project based structures. Go. प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिलु प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर रे कोन होची ना नॉर्मली गोटे कंपनी रे जेति कि सब एफिशिएंट पीपल अछन गोटे प्रोजेक्ट आसला से प्रोजेक्ट टा हैंडल करिया पई सब डिपार्टमेंट रे गोटे गोटे लोकान का आनिबा जे जोडा रे एक्सपर्ट अछि सेमान मिसी के कोन करिया गोटे टीम करबा से टीम ना कोन करबो कैरी आउट करबो एक्टिविटीज किबा कैरी आउट करबो प्रोजेक्ट्स तो सेतरे एडवांटेज कोन सेतरे डिसएडवांटेज कोन निजे भी लिखि पारियो एटा क्वेश्चन खाली कष्ट लागछ एटा के इंपोर्टेंट आसिला आसी पारे मते तुमको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सब जरा एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिखे छी ऑलरेडी को यूनिट ना यूनिट नंबर 10 ना एटा बोले सेडा ना एडी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एथिरे अछि देखो कंसर्न्स कोन सिग्निफिकेंस सब लिखे छी ऑलरेडी ओके 10.4 हेड रे ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर मूर्ख पिल्ला जा प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर देखा एडवांटेज डिसएडवांटेज SBU SBU माने कोन सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट और डिवीजन जोड़ा रे कि निजर ओन विजन मिशन सब थिबो बट पेरेंट कंपनी रो टिके अलगा हे गिरी थिबो केमती आइडेंटिफाई करिवो इंटरनल क्राइटेरिया एक्सटर्नल क्राइटेरिया तो ए जा मु इंपोर्टेंट कहितली अलगा अलगा चार्ट बने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर टा 2021 डिसेंबर से 50 डिसएडवांटेज 4 मार्क में 50 में 4टा पॉइंट देछि से examples explain with examples why do we need the SBU 2022 December 6 marks देखो एडा है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एडा फंक्शनल स्ट्रक्चर एडा ट्रांसनेशनल और प्रोजेक्ट बेस्ड एडा एडे गोटे प्रोजेक्ट मैनेजर थिबो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को गोटे गोटे डिपार्टमेंट रो गोटे गोटे लोक आनिबे एडार एडवांटेज एडार डिसएडवांटेज एडार डिसएडवांटेज टा पचारछि 2 मार्क्स पे ओके चलो देन से पचारछि कोन मार्केटिंग स्ट्रेटजी रो मीनिंग कोन गुटे मार्क पे पचारछि सेटा तो लिखि पारिबो देन SBU रो अगेन रीजंस ऑफ यूजिंग एन SBU तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहितली त मन ऑलरेडी लिखिला कहितली कौन कहला से मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर रीजंस ऑफ यूजिंग SBU रीजंस कौन कौन तार पर्पस माने एडा इंपोर्टेंस लिखि देले हबो को जिनस पे SBU करियर दरकार ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फोकस स्ट्रेटजी बेटर रिसोर्स एलोकेशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ए जा पे तुम करियर दरकार सेल्स से जते इस देख पेज 295 SBU रो चार्ट पाखरे एजा सब लेखि करी ऐड कर देबो पेज रे लगे देबो त मन चार्ट जदी बनै छ
पेज 293 294 295 2018 जून रे देइछु तो अगेन चांस अछि पचारियर मेजर रीजंस ऑफ एसबीओ अप्रोच 8 मार्क्स में पचार तो से जाको लिखिया पड़ियो तुमको अगेन राइटिंग प्रैक्टिस दरकार तापर एते रेलेवेंट क्वेश्चंस किछि नाइ देखो 2017 डिसेंबर रे नॉर्मल जिंस पचाछि मार्केटिंग प्लान कोन सोशल मार्केटिंग कोन important features which human resource strategy may bring to bear organization माने human resource strategy रो human resource department रो strategy गुडा को कोन रहिया दरकार सेडा basic characteristics of BPR 2 marks में पचाछि 2016 डिसेंबर तापर 2013 डिसेंबर रे कोर कॉम्पिटेंसी काली हम ऑलरेडी डिस्कस करथिलु कोर कॉम्पिटेंसी रो मीनिंग से टेस्ट गुडा को कहिछ देखो टेस्ट माने किछि नै कोर कॉम्पिटेंसी हां एडा भी तो लिखिथिलु को जिंस थिले सेडा फिट हबो गोटे कोर कॉम्पिटेंसी काम आसीबो ना नै माने इफेक्टिव ना नै देखिया पे कोन रहया दरकार तो सेडा आगे से अगेन पचाछि क्वेश्चन टिके अलगा कर दिछि 2022 डिसेंबर रे मध्ये पचाछि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंस 3 hours of re-engineering 3 hours of re-engineering मन अछि redesign retool reorchestrate redesign retool reorchestrate reorchestrate आली कहले सब जगह अगेन रीअसेंबल करियर रे माने फर्स्ट रीडिजाइन माने तमे रीप्लान करबो रीटूल माने को टूल्स यूज करबो सेडा शिफ्ट करबो रीऑर्केस्ट्रेट माने एक्चुअली से जिंसडा कैरी आउट करबो redoing it हला इंपोर्टेंट मार्क करो सेडा पेज 289 रे अछि सानो क्वेश्चन डा 4 मार्क्स में पचाछि 22 डिसेंबर तापर स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करिछि क्लास रे प्रोडक्शन स्ट्रेटजी रे कोन करबो प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कोन ऑब्जेक्टिव फिक्स करबो एनवायरनमेंट ता देखिबो तापर से प्रोडक्ट जोडा करूछि मार्केट कंडीशन को धरि की करबो मनोर तार डिमांड एबे अधिक अछि 2 मास रे अधिक हबो प्रोडक्शन एक्टिविटी से हिसाब रे प्लान करियो जदि तार डिमांड एते नै तो से हिसाब रे प्लान करिवो देन कोन करिवो सेडा एक्चुअली एडॉप्ट करिवो तापरे 2019 डिसेंबर रे अगेन से पचारची प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बिसरे बिहेवियर कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम बिहेवियर कंट्रोल डम पढीची क्लास रे ते मन छ मु जाननी हेडिंग बिहेवियर कंट्रोल पर्सनल कंट्रोल आ आउटपुट कंट्रोल पर्सनल रे कोन सेल्फ मोटिवेशन निज निजर जहा भी इंडिविजुअल और सेल्फ बेस्ड एडा कोन एक्शन और बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज एडा होची आउटपुट और रिजल्ट बेस्ड माने एडा रे कोन थाउची जे से रूल्स प्रोसीजर सुपरविजन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सब केति की फॉलो करछ ओके तापरे देखो इंपोर्टेंट मार्क करिवो पेज नंबर 285 एमसी किन्सेस 7S फ्रेमवर्क strategy structure system style staff shared value skills 7S structure page 285 सेडा अलगा क्वेश्चन डा आउ दिडा क्वेश्चन रिपीट हेची फीचर्स ऑफ एचआर स्ट्रेटजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर एमसी किन्सेस 7S फ्रेमवर्क देखो internal and external strategy variables page 285 Then repetitive questions again asked. Define the terms re-engineering and process in BPR. Steps involved in the formulation of production strategy. Most important questions रे सबुडो important आसुची हमर कोन बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग SBU प्रोडक्शन स्ट्रेटजी लिखि दियो सेड कोन कोन आसुची HR स्ट्रेटजी
goal congruence, HR strategy, goal congruence, business process re-engineering, goal congruence, तापरे formulation of production strategy, formulation of production strategy, SBU, तापरे advantage and disadvantages of matrix organization structure, matrix organization structure, BPR तले लेखो types of firms in which BPR can be applied, page 282 रे अछि सेडा, types of firms for which BPR can be applied, okay, then functional organizational structure, organizational structure are several types, कौन कौन थिला चारटा थिला मन अछि ना, functional structure, geographic structure, matrix structure and hybrid structure, तो सेटा खाली से total long question पचरे नाल तो कोन गोटे गोटे individually पचरियो, तो individually से 4 marks को पचरची 2017 जून रे, that is functional organizational structure, तो एटार basic purpose हमर कोन थिला keywords गुडा को थिला कोन ना organization is divided according to the function with which they are carrying out हैला, so organizational structure means the framework in which the organization defines how tasks are divided, resources are deployed and departments are coordinated, माने गुटे particular functional objective रे सेडा काम करिवो, ता हिसाब रे organization रे divide होबो, ता हिसाब रे resources allocate होबो and ता हिसाब रे department रो काम जा कोन होबो coordinate होबो हैला, अगेन से तळे देछि देखो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एडा होछि सबडु कॉमन चारटा टाइप हमकु दिया आइछि, सबडु कॉमन होछि फंक्शनल स्ट्रक्चर टा, ओके, तो एडा होछि परस्यूइंग स्ट्रेटजी ऑफ कंसंट्रेशन और वेरी हाई रिलेटेडनेस, a functional structure is most appropriate when the organization is small to medium size and relatively stable, माने सेडा सबडु अधिक कोडी काम करियो एमटीआर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टा जोडा रखी ऑर्गेनाइजेशन रो टाइप टा टिके स्मॉल स्केल किंबा मीडियम स्केल हैला, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को एते अधिक सुटेबल नाही, बट फिर भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टा मोस्ट कॉमन हैला, तो सरला चैप्टर टा किछि डाउट्स अछि करा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक अच्छे, थैंक यू सो मच, the remaining class will discuss the remaining chapters and I request कि जो chapters जो portion important अछि से उडा अलग रे लेखि के रखिथियो ताकि तमरो मिक्स अप हे जिवने एंड तमरो रिवीजन टा इजी होबो, ठीक अछि, थैंक यू सो मच।